Good afternoon, students. In this lecture of digital image processing, we will going to discuss the topic that is the periodic noise reduction by the frequency domain filters. See, what the noise means. Noise means the disturbance in an image. For example, we capture some image and that image is blurred. So, from that blurred image, we want टू एक्सट्रैक्ट द एक्चुअल ऑब्जेक्ट. जो ब्लर्ड इमेज है उसमें जो एक्चुअल इमेज है वो डिस्कवर करनी है, उसके लिए हम फिल्टर्स को यूज़ करते हैं. सो नाउ फ्रीक्वेंसी डोमेन फिल्टर्स में नॉइज रिडक्शन कैसे होती है. सो इट इज़ यूजफुल टू ऑपरेट अ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी बैंड और द स्मॉल रीजन्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी रिक्टेंगल्स. कि हम किसी फ्रीक्वेंसी डोमेन फिल्टर्स को यूज़ करें स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी बैंड्स को, जिसके साथ हम किसी इमेज की क्वालिटी को एनहांस कर सकें और नॉइज़ को रिमूव कर सकें. तो उसके लिए हम फिल्टर्स यूज़ करते हैं लाइक द बैंड रिजेक्ट फिल्टर इज़ यूज्ड, बैंड पास फिल्टर एंड नोच फिल्टर. Clear? These are the filters which are to be used by the periodic noise in the frequency domain filter. So band reject filter and the band pass filter, these both filters are operates on the specific frequency band, specific value of that band, and the notch filters are to be operates on the small regions of the frequency rectangle. Clear? So we started with the first point, that is the band reject filter. So band reject filter may remove and attenuate a band of frequency about the origin of the Fourier transform. Fourier transform हम already कर चुके हैं in the frequency domain filtering. So the band reject filter हम use करते हैं to remove and attenuate a band of frequency. उस frequency range को हम remove कर देते हैं जो image में noise create करी है about the origin से of the Fourier transform. Clear? तो उसके लिए हम कुछ पॉइंट्स को यूज़ करेंगे फॉर द एक्सप्रेशन. सम सिम्बल्स आर टू यूज लाइक डी यू कॉमा वी. what it means, it is the distance from the center of the frequency rectangle. For example, this is the image and here is the pixel value. So duv represent the distance from the center of the rectangle. Second point is the d naught, it is the radial center of the band, and w is the width of the band. So what expression is used for the band reject filter? HBR comma B. HBR क्या represent कर रहा है? HBR is the band reject filter. Sometimes it is written as HBRF. Clear? U comma V are the coordinate in case of the frequency domain. Spatial में हम क्या use कर रहे थे? F X comma Y. But in case of frequency domain, we are using the filters that is HU comma V. So फिल्टर के लिए हम HU comma V डालते थे, बट यहाँ पर फिल्टर कौन सा यूज़ हो रहा है? बैंड रिजेक्ट फिल्टर. तो यहाँ पर स्पेसिफिक कर दिया दैट इज़ द बैंड रिजेक्ट फिल्टर. सो वैल्यूज़ आर, फर्स्ट वैल्यू इज -1. In that case, if distance from the center of the origin of any rectangle du comma b, if this value distance is less than d naught, that is the radial distance, minus w divided by 2, width divided by 2, its value is 0. If d naught minus w divided by 2 is less than and equal to d u comma b, that value is less than equal to d naught plus w divided by 2. Its value is 1 if du comma v distance from the center of the frequency rectangle is greater than the radial center of band plus the width value, half of the width value. So in this way, this expression is to be used to remove the noise from the image by using the frequency domain filter. Which filter is to be used? Band reject filter is to be used. What value is are to be calculated? The distance from the frequency band, the radial center of the point, and the width of the band, depending upon which we have some values like -1, 0 and 1. माइनस वैल्यू कब आएगी? जब ये एक्सप्रेशन फॉलो होगा. 0 कब आएगी? जब ये एक्सप्रेशन फॉलो होगा. एंड 1 फॉर दिस एक्सप्रेशन. क्लियर?